इवेलुएट दिस। सी कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? कॉट इनवर्स cot x equal to x if x belongs to 0 to pi. Cot 0 means cos 0 by sin 0, cos 0 means 1, so undefined. Similarly, cos pi by sin pi, so this will be open bracket. Okay, now see 17 pi by 3, it's not within this range, so you have to reduce this one. So sin cot inverse cot 17 pi, you can write 18 pi minus pi by 3. I should use first parenthesis here, second parenthesis here. Cot inverse cot this by this 6 pi, this by this pi by 3. This must be acute. Sin cot inverse, and by ASTC rule or quadrant rule, 6 pi over here minus pi by 3, fourth quadrant, cot is negative, so minus cot of pi by 3, and as there is pi, so cot will remain same, cot. And see 1 pi 2 pi 6 pi, so pi over here, all sine tan cos, cos positive but cot negative. Now see, if there is negative, then what you have to do in case of cot? You have to write pi minus pi by 3 again, because if you take it inside, then it will not be in principal branch 0 to pi. That's why do this way. Now see, this is within this range, so you can remove this cot. So sine pi minus pi by 3, and which is equal to obviously sine pi by 3, and pi minus pi by 3 over here, sine positive, sine 60 degree is root 3 by 2. ওটাকে ব্রেক করে দাও। Find domain and range of this function. Domain means values of x for which this is defined. So to make this defined, ये defined होने के लिए this must be greater than equal to 0. Now इसको factorize करो, a plus b into minus b. अब एक नंबर लाइन जैसे बनाओ, दिस जीरो करके, तो दिस जीरो करने से -3, दिस जीरो करने से +3 है ना। अब ये दोनों का बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो, से 2, और इसमें पुट करके देखो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आ रहा है। इफ यू पुट 2 इन प्लेस ऑफ x, पॉजिटिव, बाकी दोनों ऑटोमेटिक नेगेटिव दे दो। नाउ सी, यू नीड पॉजिटिव, एज ये गिवन है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव में शेड दे दो। दैट मीन्स डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -3 to 3, और ये दोनों इंक्लूसिव होने से भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज रूट 0 इज 0। ये हो गया डोमेन। नाउ व्हाट अबाउट रेंज? रेंज मीन्स वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। तो जो क्वेश्चन है उसको y मान लो, तो ये y स्क्वायर रूट अंडर है y इक्वल टू स्क्वायर रूट, दैट मीन्स y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रिमेंबर। नाउ इसको रिवर्स करके x निकालो। Now x is defined if 9 minus y square is greater than 0. So same way 3 plus y into 3 minus y greater than equal to 0. Prove that sin inverse 8 by 17 plus cos inverse 4 by 5 equal to cot inverse 36 by 77.
ये मिला কারো প্রবলেম হলে করতে পারো। साइन নিল সুরজ। साइन इनवर्स कॉसेक होगा ना না, Sine। এটা ওরকম সাইন নয়, 1/sin নয়, এটা तो क्या है 12 আছে। तो साइन टू द पावर माइनस ये तो इसी हो गया इसके बाद क्या करते हैं तो जीरो हो जाएगा लेकिन शीशे की वजह से कुछ काम शीशे में क्या कर रहा था इम्प्रूवमेंट टेस्ट जो है उसका बेंचेस मैं केशव महिलान और विवेक सेट किया पूरा क्लासरूम पीछे का खुलवा है साफ सफाई करवाना है बेंच लगाए टांग टांग के भाई की कलम फार्म फिर अभी कल सुबह जल्दी जाके मैं अहिलान विवेक और केशव को ठीक भी करना है कि हम लोग पढ़ाई कर पाए इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन, व्हाट टू डू। सो इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है पहले, ओके, देन इंटीग्रेट। सो इसका जाना पहचाना फॉर्मूला क्या है, sec x tan x, इस फॉर्म पे लाना है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x मीन्स sec x plus c. So try to convert this into this form. Integration sin x, sec x square means sec means 1 by cos, so cos x into cos x dx. That means sin by cos, and then 1 by cos tan x, 1 by cos means sec x, and tan x sec x formula is secant x plus c. Now try to evaluate 5 to the power x dx. Differentiate both sides with respect to x. Now derivative formula was ddx of x to the power a means a dot x to the power a minus 1, and ddx of y to the power a means a times y to the power a minus 1, and then ddx of y. If you have different something different, then you have to derivative of this. Differentiation of this one you have to do. That is chain rule. So over here 2/3 will come in from for this, then ddx of y, and ddx of constant is 0. Multiply with 3/2 both sides, so this will vanish, minus 1/3. Now put x equal to, or do one thing. Take this side, negative power minus x to the power negative 1/3. Now if you take it up and take it down, then power sign will change. That is your d over dx, or you can write this way also. Now we need to find this one. So now you have this,
rest of this 1 put per. So 1 by 1 to the power 1/3. 1 by 1 means 1. 1 to the power anything is 1. Because 1 to the power anything is 1. So that is your final answer. And dy by dx simply was negative or is 4. This you can write as cube root of form also.